हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नूर आयशा, योर बायोलॉजी एक्सपर्ट। चलिए हम आज जानते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस वाया हार्मोन्स। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन थ्रू नर्वस सिस्टम तो आपने सुना होगा, लेकिन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन थ्रू हार्मोन्स हम पहली बार पढ़ रहे हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं, हार्मोन्स क्या होते हैं, वो किस तरह फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं, बॉडी को कोऑर्डिनेट करते हैं और क्या इफ़ेक्ट होता है उनका बॉडी पे जब ओवर सेक्रेशन हो या अंडर सेक्रेशन हो। इन सारी बातों को हम जानते हैं अपने इस लेक्चर में। There are signaling molecules which run throughout your body via blood, instructing cells what to do and what not to do. And these chemicals are hormones. And they bring about control and coordination. So control and coordination, दो important systems bring about करते हैं. They are nervous system, one system is nervous system and another system is endocrine system. Of course, when nervous system is acting effectively, हम लोगों को क्यों और एक system की ज़रूरत पड़ती है? What is the need to have another system? This is because nervous system has certain drawbacks or limitations. What are the limitations of this system? Nervous system is having limited access. Very, very limited access. All the nerve cells are not connected to the body. All the nerve cells are not connected to the body. To have complete control over a body system, चाहिए कि सारे cells connected हों, लेकिन nervous tissue में ऐसे नहीं होता है. Nervous tissue has very limited access. अगर मैं आपसे बोलूं कि चलिए मोबाइल प्लान लेते हैं, एक लिमिटेड ऑफर है और एक अनलिमिटेड पैकेज है, तो विच वन वुड यू प्रेफर? ऑब्वियसली आप प्रेफर करोगे अनलिमिटेड पैकेज को. सो नेचर हैज़ ऑल्सो प्रेफर्ड अ सिमिलर पैकेज वेर इन एंडोक्राइन सिस्टम ऑपरेट्स. And this endocrine system has unlimited access. क्योंकि इसका एक्सेस अनलिमिटेड है, क्योंकि ये वर्क करता है थ्रू ब्लड, whereas nervous system acts through neurons और nerve cells जिनका एक्सेस बहुत कम होता है. And nervous tissue is very very swift because यहाँ पे electrical signals होते हैं. It works via electrical signals. So the impulses are carried very fast. Whereas endocrine system works through hormones. And these hormones, they are released slowly into the blood. And they have long lasting impact on the body. Whereas the impact of nervous tissue is very very short lived. चलिए एक एग्जाम्पल, थोड़े एग्जाम्पल्स लेते हैं ये बात जानने के लिए कि लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट क्या होता है. राइट फ्रॉम ग्रोथ, राइट फ्रॉम बर्थ, द ग्रोथ स्टार्ट्स व्हेन अ चाइल्ड इज इन द womb. सो जब ग्रोथ शुरू होती है तो रैपिड ग्रोथ होती है टिल द एज ऑफ एडोलेसेंस, ऑलमोस्ट टिल द एज ऑफ 13 or 14 in females and almost till the age of 17 to 18 in males, in male kids. So the impact is such long lasting, it goes for decades. If you consider menstruation, menstruation शुरू होता है approximately 12 या 13 years की एज में और menopause होता है, menopause is cessation of menstrual cycle, वो होता है at the age of 50 to 55 depending on the health of the female. तो almost 4 decade, 40 साल. So can you imagine the impact of hormones on your body? And pregnancy में 9 months, because of the influence of the hormones, the impact is very long lasting. You don't see this in the nervous tissue, and this is very fast.
The nerve impulses are very fast, they are super fast, but they are not long lasting. So nature had to come up with one more system which could act effectively in synchronization with nervous system to bring about control and coordination. चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं इसको समझने के लिए. अभी हम लोग चल रहे हैं, अगर आपने सामने सांप देख लिया तो व्हाट इज योर रिएक्शन? सांप, स्नेक, यू आर स्कैर्ड, यू आर डैम स्कैर्ड, राइट? आप वहां से क्या करोगे? आप वहां से भागोगे. ऑफ कोर्स आपका नर्वस सिस्टम यहाँ पे काम कर रहा है क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन हो रहा है एंड यू आर ट्राइंग टू इवेट द सिचुएशन एंड यू वांट टू रन आउट ऑफ दैट प्लेस. लेकिन वहां से भागने के बाद भी आप फील करोगे कि आपके दिल की धड़कन तेज हो रही है और आपकी सांसें जोर जोर से चल रही हैं. व्हाई इज इट सो? दिस इज बिकॉज ऑफ हॉर्मोन्स. आपकी बॉडी में एक ग्लैंड होता है जिसको एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं, जिसके बारे में हम और फर्दर स्टडी करेंगे. तो एड्रिनल ग्लैंड हॉर्मोन्स को ब्लड में डाल देता है एंड दीज हॉर्मोन्स enter into the blood, they go to the heart and lungs and they act on receptors which are present on the target cells. आपकी सांस फूल रही है, आप जोर जोर से सांस ले रहे हो क्योंकि इस हार्मोन के टारगेट सेल्स लंग्स पे होते हैं और आपका हार्ट बहुत तेज़ी से, आपका दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा है क्योंकि वहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं इस हार्मोन के लिए. रिसेप्टर्स वो होते हैं जो हार्मोन्स को अनलॉक करते हैं और मैसेज को कन्वे करते हैं. In this way, your circulatory system and respiratory system are coordinating and controlling your body. क्या हो रहा है? The energy is channelized towards muscle so that you can evade the dangerous situation. You are running out of that place. You are moving swiftly. Nervous system is acting, and then you are scared and your body is preparing yourself to combat the situation, and this is possible because of the hormones. Now do you get the concept of control and coordination? Here circulatory system and your respiratory system, they are working in tandem or synchronization to bring about control. So now you get the meaning of control and coordination. Now let us see how this control and coordination is brought about very effectively via hormones. So hormones are produced by glands called endocrine glands. So what is a gland? Gland is basically a secretory unit or secretory structure. They make different kinds of secretions. So can you give me examples of secretions? Saliva is secretion. Saliva that is produced in the mouth to digest food is a secretion. Mucus is secretion. And oil or sebum, due to which you get acne, is a secretion. Milk ejected from mammary glands is secretion. The digestive enzymes, different types of enzymes, be it pancreatic enzymes or enzymes from other parts of the digestive tract, these are all secretions. And of course, our beloved hormones about which we are talking, they are also secretions. But what is the difference between these two types of glands? These are exocrine glands and endocrine glands. Exo, in biology, if you want to decipher something, there is a simple way. You can split the word and get the meaning. Exocrine. Exo means outside. Exo, you can remember one shortcut, exit. Exit is outside. Exo. Crine, secretion. So these glands, they pour their secretions outside. They have a duct. They have a duct. Duct is a tube-like structure or a pipe-like structure. So the secretions produced by exocrine glands are poured outside via tubular structures or pipes called ducts. अभी देखते हैं कि सलाइवा कहाँ आता है? वो ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट कमिंग आउट ऑफ योर माउथ, इट इज़ इनसाइड द माउथ, बट सलाइवरी ग्लैंड्स आर pouring saliva into the mouth.
So it is a secretion of exocrine gland. Then mucus, it's a secretion of exocrine gland. Oil, see oil you can see on your face, on your body. ये बाहर आता है, surface पे आता है, तो ये भी exocrine gland का secretion हो गया. Then enzymes, different types of digestive enzymes, but they are not secreted out of the body, but these secretions are poured into the digestive system through ducts. So these are also secretions of the exocrine gland. Whereas hormones, typically if you look at hormones, ये produce होते हैं endocrine glands से. So endocrine gland, endo refers to inside and crine refers to secretion. So the secretions of the endocrine glands are poured into the blood. They are not poured outside, they are poured into the blood. So to pour them into the blood, ducts are not required. So they are ductless glands. They don't have ducts. They pour their secretions directly into the blood, and since blood reaches all the parts of the body, they can exert a great control over different functions in the body. Let's play this animation and see how these glands do work. See, the exocrine gland is producing its secretion and the secretion is moving out via duct, whereas endocrine glands are making secretions and they are poured into the blood. So mainly endocrine glands are ductless and they pour their secretions directly into the blood, and their secretions are mainly hormones. Whereas exocrine glands have ducts and they pour their secretions into the duct, and their secretions are generally enzymes, ions, water, mucus, and so on. We do have major endocrine glands in the body, and these glands are located throughout our body at different locations. Let's take a look at different major glands which are located in the body, which are solely responsible for production of hormones. This is brain, wherein we have a major gland, pituitary, thyroid gland, adrenals atop kidneys, pancreas, it's a mixed gland, testis in male and ovaries in females. These are the major endocrine glands of the body which do make hormones. Then what are these hormones? What is the chemical nature of the hormone? The word hormone means to set in motion or to excite or to spur in. And the first hormone to be discovered was secretin, and we will study about this in our digestion chapter. We won't focus on this secretion, focus on the secretin now. We'll study this in digestion chapter. So hormones are basically proteinaceous, or they are glycoproteins, or they are steroid-like molecules, or they can be peptides. What is the chemical nature of hormones? They can be either proteins composed of amino acids, because basic units of proteins are amino acids. They can be glycoproteins, proteins with little bit of sugar moieties in them, but there are no sugar hormones as such. And they are steroids, steroid in nature, like the structure is like that of a cholesterol molecule, and they can be peptides, small hormones with less number of amino acids. And the hormones, they are secreted, as you saw, they are secreted directly into the blood, and they are effective in smaller concentrations. Smaller concentration is effective to bring about major changes, or they are never stored in the body. Like these hormones are not stored in the body. Glucose is stored in the body in the form of glycogen, but hormones are not stored in the body. They are produced when they are required and eliminated from the body
when they are not needed. So, with this background, we'll understand the major types of hormones and the major endocrine glands which produce them. Okay, since hormones are released directly into the blood, since blood goes to all the parts of the body, how cells receive signals? See, not all the cells of the body have receptors for the respective hormones. It is as simple as this. आप जा रहे हो रास्ते में, बहुत सारे दरवाजे खुले हैं, तो आप कोई भी दरवाज़ा खुला है तो अंदर नहीं जा सकते. This is not possible. You cannot just barge into any house. If you have acquaintances, आप घर के लोगों को जानते हो तो ही आप अंदर जा सकते हो, वरना आप नहीं जा सकते. आप अजनबी घर में घुस नहीं सकते. The same analogy is applicable here. The cells which have receptors are called target cells. इन्हीं target cells पे hormone जाके bind करता है. The secretory cell is secreting hormone directly into the blood. From the blood, the hormone is reaching target cell. Target cell कौन सा होता है? Target cell वो होता है जिस पे receptors लगे होते हैं for respective hormone. If the hormone and receptor are not specific, then they cannot interact. स्पेसिफिक हार्मोन स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ ही इंटरैक्ट करता है. अभी ग्लूकोज को सेल के अंदर इंटरनलाइज करने के लिए इंसुलिन रिसेप्टर्स चाहिए. ग्लूकोज को इंटरनलाइज करने के लिए इंसुलिन रिसेप्टर. अगर आप वहाँ पे थायराइड ग्लैंड का रिसेप्टर लगा दोगे तो इट विल नॉट गेट इनटू द सेल. So it is as simple as this. So the target cell is the one which has receptors, and these receptors are basically प्रोटीनेशियस इन नेचर. ये प्रोटीन के बने हुए होते हैं. तो हर हार्मोन हर सेल पे जाके बाइंड करके इट कैन नॉट एलिसिट एनी रेस्पॉन्स. दे आर वेरी वेरी स्पेसिफिक एंड दे इंटरैक्ट ओनली विथ स्पेसिफिक रिसेप्टर्स टू ब्रिंग अबाउट अ पर्टिकुलर रेस्पॉन्स. अगर टारगेट सेल नहीं है तो रिसेप्टर्स नहीं होंगे. अगर रिसेप्टर्स नहीं होंगे तो हार्मोन कैन नॉट बाइंड टू दैट सेल. सो from here it is very very clear that hormones and target cells are very specific, they are very compatible and they act through receptors. So आइए देखते हैं हम मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में जानते हैं. चलिए जानते हैं मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में. हाइपोथैलेमस is one of the major endocrine glands and this gland is otherwise called supermaster or master's master. This gland is supermaster because this gland controls another gland called master gland, pituitary. As you can see here, यहाँ पे pituitary gland है. Pituitary gland is the master gland और ये master gland को control करता है hypothalamus. So hypothalamus is master's master. So hypothalamus is called supermaster or master's master. हम कोई भी ग्लैंड जब पढ़ते हैं तो हम उसका लोकेशन पहले देखते हैं, उसका फंक्शन देखते हैं, वो कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है हम ये जानते हैं. तो इसी तरह से हम देखते हैं कि ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये कहाँ पे लोकेट हुआ है, ये क्या प्रोड्यूस करता है और ये कैसे पिट्यूटरी को इन्फ्लुएंस करता है या कंट्रोल करता है. सो हाइपोथैलेमस एज यू कैन सी इज़ अ पार्ट ऑफ फोरब्रेन. ये फोरब्रेन का पार्ट है और ये हाइपोथैलेमस के नीचे बना हुआ है, इसीलिए इसको हाइपोथैलेमस कहते हैं. हाइपो इन बायोलॉजी रेफर्स टू एनीथिंग विच इज लो और बिलो. हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन का मतलब क्या होता है? लो ब्लड प्रेशर. हाइपोडर्मिस, बिलो डर्मिस, लो. लो हाइपो का मतलब होता है लो. सो हाइपोथैलेमस इज लोकेटेड इन द फोर ब्रेन एंड इट इज लोकेटेड बिलो थैलेमस. So it is called hypothalamus. और ये पिट्यूटरी के ऊपर होता है. This is pituitary gland, our master gland, and hypothalamus is situated just above the pituitary gland, and they are connected through infundibulum. एक डंडी है, एक stalk है, which connects hypothalamus to the pituitary.
तो हाइपोथैलेमस इज अ कनेक्टिंग लिंक, इट्स अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। ये क्या है? कनेक्टिंग लिंक है। दिस इज अबाउट द साइज ऑफ एन आमंड, बादाम के साइज का होता है, बहुत छोटा होता है, लेकिन इट हैज़ अ मेजर रोल टू प्ले इन मेजर फंक्शंस बिकॉज ये डायरेक्टली पिट्यूटरी को इन्फ्लुएंस करता है। एंड दिस इज स्मार्ट कंट्रोल कोऑर्डिनेशन सेंटर ऑफ द बॉडी। हाइपोथैलेमस इज स्मार्ट कंट्रोल कोऑर्डिनेशन सेंटर। ये बॉडी को एक स्टेबल स्टेट में मेंटेन करता है। व्हाट इज अ स्टेबल स्टेट कॉल्ड? ये बॉडी को एक स्टेबल स्टेट में मेंटेन करता है एंड दिस स्टेबल स्टेट इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। आइए जानते हैं होम्योस्टेसिस क्या है विथ एग्जांपल्स। होम्योस्टेसिस refers to steady and constant internal environment of the body. Steady and constant internal environment of the body. कौन सा environment क्या constant होता है आपकी बॉडी में? For example, आपका body temperature, your body temperature is constant. Of course there are variations. When you have fever there are variations. वरना आपका body temperature तो constant होता है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 फ़ारेनहीट। कौन मेंटेन करता है? ये मेंटेन करता है आपका हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस एक्ट्स एज अ थर्मोस्टैट। इट सेंसर्स, इसके पास सेंसर्स होते हैं जो बॉडी टेम्परेचर को सेंस करते हैं। और आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन होता है इन दिस रेंज। इफ द पर्सन इज नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 mm ऑफ मर्क्यूरी। कौन मेंटेन करता है? हाइपोथैलेमस वाया इट्स हॉर्मोन्स। आई मीन not directly via its hormones. It secretes certain factors or hormones which influence pituitary to secrete hormones which in turn maintain blood pressure. इसके बारे में हम बात करते हैं जैसे जैसे हम हॉर्मोन्स के बारे में पता करते हैं। Then आपका कांस्टेंट ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन होता है। फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है। फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज, रात में आपने खाना खाया, सुबह तक कुछ नहीं खाया, इसको फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज बोलते हैं। तो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज शुड बी इन द रेंज ऑफ 70 to 100 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। सो ये रेंज, अगर पर्सन डायबिटिक नहीं है तो इसी रेंज में मेंटेन होता है। इसको भी हाइपोथैलेमस मेंटेन करता है। कैसे मेंटेन करता है ये हम आगे पता करते हैं। क्या करता है, हाउ इट मेंटेन्स, विल गेट टू अंडरस्टैंड दिस। देन सो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ हाइपोथैलेमस? हमने होम्योस्टेसिस के बारे में पढ़ लिया। अभी हम जानते हैं होम्योस्टेसिस के बारे में। तो व्हाट इज होम्योस्टेसिस पता कर लिया, अभी हम फंक्शंस जानते हैं हाइपोथैलेमस के। तो हाइपोथैलेमस, जैसे मैंने अभी बताया कि वो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है या कंट्रोल करता है। द स्लाइट वेरिएशंस इन बॉडी टेम्परेचर आर वेरी नॉर्मल, लेकिन उससे ज़्यादा टेम्परेचर, अगर 38 डिग्री बॉडी टेम्परेचर है तो दैट इज़ फीवर। तो आपका हाइपोथैलेमस बॉडी टेम्परेचर को, आपके बॉडी टेम्परेचर को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कंपेयर करता है। हाइपोथैलेमस में सेंसर्स होते हैं जो बॉडी टेम्परेचर को मेजर करते हैं। अगर आपका टेम्परेचर लो है तो वो थ्रू थायराइड ग्लैंड सिग्नल करेगा कि हीट प्रोड्यूस करो, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करो और हीट जनरेट करो, सो दैट बॉडी टेम्परेचर गोस अप। अगर बॉडी टेम्परेचर हाई है तो आप स्वेट करोगे, यू विल स्वेट, सो दैट आपका टेम्परेचर इसी रेंज में आ जाए, नॉर्मल रेंज में आ जाए। सो दिस इज हाउ यू मेंटेन योर बॉडी टेम्परेचर। देन इट कंट्रोल्स थर्स्ट एंड यूरिन आउटपुट। ADH या वैसोप्रेसिन, अनदर हार्मोन जो आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन करता है। इट कंट्रोल्स फूड इनटेक और हंगर एंड सेशिएटी सेंटर। सी, अगर मैं ये कहूँ कि
hunger is not in your stomach, hunger is in your mind, it will sound weird, isn't it? आपको लगेगा कि मैं गलत बोल रही हूँ. Hunger, how come hunger? You feel hungry. When you eat, you feel full. And stomach is involved here. नहीं, ये stomach से involved नहीं है. It is actually concerned with the hypothalamus or the brain. आपको जब भूख लगती है तो hypothalamus का सेंटर रेगुलेट होता है, तो आप खाते हो, मेटाबॉलिज्म होता है, ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होता है, ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होता है, योर ब्रेन गेट्स सिग्नल टू स्टॉप ईटिंग, आप खाना बंद करते हो, ब्लड ग्लूकोज लेवल स्टेबलाइज होता है, आप मेटाबोलाइज करते हो, एनर्जी प्रोड्यूस होती है. थोड़ी देर के बाद जब डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, अब्जॉर्प्शन हो जाता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल ड्रॉप करने लगता है. जैसे ब्लड ग्लूकोज लेवल ड्रॉप करने लगता है, फिर से आपके हाइपोथैलेमस को सिग्नल होता है कि नहीं, ब्लड ग्लूकोज लेवल इज ड्रॉपिंग, यू नीड टू ईट. दिस इज हाउ योर हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स योर हंगर. इट इज़ नॉट स्टमक, इट इज़ हाइपोथैलेमस. Then it controls anterior pituitary hormones. हाँ, इसके बारे में हम ज़्यादा जानते हैं अभी. हाइपोथैलेमस 2 हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करता है जिसको हम रिलीजिंग फैक्टर्स या हम उसको इनहिबिटिंग फैक्टर्स या हॉर्मोन्स बोल सकते हैं. हाइपोथैलेमस प्रोड्यूसेस रिलीजिंग हॉर्मोन्स और रिलीजिंग फैक्टर्स. And inhibiting or inhibitory hormones or inhibitory factors. जो डायरेक्टली पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करते हैं. एक्चुअली इसी की वजह से हाइपोथैलेमस सुपर मास्टर है. ये पिट्यूटरी को इंस्ट्रक्शंस देता है कि कौन से ग्लैंड को किस काम के लिए इंस्ट्रक्शंस देने हैं. थ्रू इट्स रिलीजिंग हॉर्मोन्स. अगर हार्मोन को निकालना है तो रिलीजिंग हॉर्मोन्स आर सिक्रेटेड फ्रॉम द हाइपोथैलेमस. हम एग्जाम्पल्स के साथ इसको पढ़ेंगे. अगर हार्मोन के सिक्रीशन को रुकवाना है, स्टॉप करवाना है, तो इनहिबिटरी हॉर्मोन्स आर रिलीज्ड फ्रॉम द हाइपोथैलेमस. Hypothalamus, apart from releasing factors and inhibiting factors, it also produces 2 hormones, and they are oxytocin and ADH or vasopressin. हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे अपनी फ्यूचर क्लासेस में. So hypothalamus controls anterior pituitary through releasing factors or inhibiting factors. This also we'll learn in detail. Then it produces posterior pituitary hormones. I mean posterior pituitary कोई हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करता है, वो सिर्फ जो हाइपोथैलेमस ऑक्सीटोसिन या ADH प्रोड्यूस करता है उसको स्टोर करता है और रिलीज करता है. तो hypothalamus is exerting action on anterior pituitary via releasing hormones, inhibiting hormones, और वो 2 hormones निकालता है जो ऑक्सीटोसिन एंड ADH हैं, जो posterior pituitary में डाले जाते हैं. और posterior pituitary इनको प्रोड्यूस नहीं करता है, it just stores. Posterior pituitary just stores the hormones produced by hypothalamus. Then it controls uterine contractions and milk ejection. This is through another hormone called prolactin. Oxytocin also has a role in uterine contractions. Milk ejection में भी oxytocin का रोल होता है, लेकिन मिल्क प्रोडक्शन में और एक हार्मोन होता है जो मेजर रोल प्ले करता है, प्रोलैक्टिन. उसके बारे में भी हम जानेंगे, जो पिट्यूटरी से प्रोड्यूस होता है. Then it participates in sleep-wake cycle. Sleep is very important aspect of life. हाँ, pineal gland is associated with sleep directly. It regulates sleep. It maintains your circadian rhythm. Circadian rhythm is regulated by pineal gland, where your sleep-awake cycle is maintained. But it regulates your sleep via hypothalamus. This we will understand when we talk about pineal gland. So let's study about master gland. The master gland is otherwise called hypophysis. Pituitary is master gland and this is otherwise called hypophysis.
Just take a look at the structure and where it is located. It is located at the base of the brain. This part is pituitary. It is located just beneath the hypothalamus. And it has two parts, anterior pituitary and posterior pituitary. And the intermediate structure that you can see is a part of anterior pituitary, and it is called pars intermedia. This part, the anterior pituitary part, is otherwise called adenohypophysis. This part, anterior part is otherwise called adenohypophysis. Hypophysis is the name of the pituitary gland. Adeno refers to anterior part. And posterior pituitary is otherwise called neurohypophysis. It is called neurohypophysis because it receives neurons directly from the hypothalamus, whereas adenohypophysis gets blood vessels through which hormones or releasing factors or inhibiting factors are released into the anterior pituitary. And this intermediate part, it is actually the part of the anterior pituitary. This part is the part of the anterior pituitary. This part is the intermediate part, and this is a part of the anterior pituitary. This also secretes a hormone. We'll study about this hormone shortly. Why is the pituitary called master gland? Because pituitary gland controls all the other major endocrine glands. We just had a look about the major glands of the body. हमने देखा pancreas, adrenal gland, testes, thymus, ovaries. इन सारे glands को pituitary control करता है. तो pituitary controls all the other glands directly. So this is called master gland. But this master is under the influence of hypothalamus. So pituitary is very, very, very important. And the secretions of the pituitary are called tropic hormones क्योंकि ये endocrine glands पे act करते हैं. But whereas there are two hormones about which I am going to discuss, they directly act on the body. Before we go to the secretions of the anterior pituitary or posterior pituitary, let's try to see how hypothalamus interacts with pituitary. So, हम ये बोल रहे थे, बात कर रहे थे कि कैसे hypothalamus pituitary को control करता है. Why is hypothalamus or how is hypothalamus regulating pituitary? This is what we were trying to understand. See, it will become very clear from this animation. हाइपोथैलेमस जैसे कि मैंने आपको बताया है वो पिट्यूटरी से ऊपर होता है और हाइपोथैलेमस से जो न्यूरॉन्स निकलते हैं उसमें से न्यूरॉन्स डायरेक्टली पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आते हैं. दिस इज़ वेरी ऑब्वियस हियर, यू कैन सी दिस. और एंटीरियर पिट्यूटरी जो मोस्ट ऑफ द पिट्यूटरी हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू इंटरेक्ट करते हैं. लेट्स प्ले दिस एनिमेशन एंड अंडरस्टैंड दिस. क्या आप देख रहे हो hormones being released from hypothalamus? ये हमारा hypothalamus है. This is our hypothalamus. ये hypothalamus है. और ये हमारा anterior pituitary हो गया और ये हो गया posterior pituitary. Adenohypophysis, neurohypophysis. तो यहाँ से न्यूरॉन्स, यहाँ से मैंने पहले बताया था हाइपोथैलेमस में कि दो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, ऑक्सीटोसिन और ADH. तो ये हार्मोन्स यहाँ से डायरेक्टली पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आते हैं. पोस्टीरियर पिट्यूटरी कोई हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करता है, कोई हार्मोन प्रोडक्शन नहीं होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में. ये आइडल होता है, लेकिन इसका काम सिर्फ स्टोर करना और व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड रिलीज करना है. ये हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स को स्टोर करता है एंड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड जब हाइपोथैलेमस से सिग्नल्स मिलते हैं तो वो उनको रिलीज करता है. एज सच पोस्टीरियर पिट्यूटरी डज नॉट प्रोड्यूस एनी हार्मोन्स.
whereas anterior pituitary which is communicating directly, ये directly communicate करता है via blood vessels. एक पोर्टल सिस्टम होता है जिसके बारे में हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. इस पोर्टल सिस्टम को बोलते हैं हम हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम. हाइपोफाइसियल, हाइपोफाइसिस पिट्यूटरी को बोलते हैं. पिट्यूटरी का अदर नेम है हाइपोफाइसिस. सो पोर्टल सिस्टम ये होता है, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में जब ब्लड जाता है विदाउट डायरेक्टली गोइंग इनटू द हार्ट, इसको पोर्टल सिस्टम कहते हैं. फॉर इंस्टेंस डाइजेस्टिव सिस्टम में before after absorption of nutrients, the blood doesn't directly go to heart. The blood gets into the liver. क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को स्टोर करना होता है और द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीजंस इज अगर कुछ भी टॉक्सिक अब्जॉर्ब हुआ है तो दैट कैन नॉट गेट इनटू द हार्ट, क्योंकि हार्ट इज़ अ वेरी वेरी वाइटल ऑर्गन. सो यू कैन नॉट अफोर्ड टू सेंड एनी टॉक्सिक सब्सटेंस इनटू द हार्ट. So similarly, we have portal system which is involved in interaction of hormones between hypothalamus and pituitary. This interaction is through hypophyseal portal system. And what is the advantage of this hypophyseal portal system? क्यों चाहिए portal system? अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा? So this portal system, अगर blood, imagine कि there is no portal system and the hormones from here are directly getting into the blood or circulatory system, तो hormones dilute हो जाएंगे. Without portal system, hormones will be diluted, जो कि हमें नहीं चाहिए. The releasing factors or inhibiting factors are poured directly into the anterior pituitary. तो जिसके लिए हम पोर्टल सिस्टम की मदद लेते हैं और ये सिस्टम इज इन्वॉल्विंग पिट्यूटरी. सो दिस सिस्टम इज कॉल्ड हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम. यहाँ पे ब्लड हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी में आता है बिफोर इट गेट्स इनटू द हार्ट, हेंस द नेम पोर्टल सिस्टम. I hope this is clear. So the interaction is direct between hypothalamus and the posterior pituitary via neurons, whereas interaction is through blood vessel between hypothalamus and the anterior pituitary. Now let us try to understand about the hormones of the pituitary. मैं बोल रही थी कि पिट्यूटरी इज़ मास्टर ग्लैंड. आपने समझ लिया कि मास्टर ग्लैंड क्यों है और वो कौन से हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं और ये किन किन फंक्शंस को इन्फ्लुएंस करता है. जस्ट टेक अ लुक एट इट. सो दिस इज पिट्यूटरी, दिस इज योर मास्टर ग्लैंड. सो दिस ग्लैंड इज प्रोड्यूसिंग growth hormone. Growth hormone is very vital for the growth of the body. We'll take up all these hormones in detail, but as such we'll take an overview of these hormones and what actions do they exert on different body parts. So pituitary secrete करता है growth hormone, anterior pituitary. The anterior pituitary secretes growth hormone, ये anterior pituitary, and this directly acts on bone and muscle. Growth होती है bone की, आपने देखा है बच्चे की ग्रोथ होती है, बोन ग्रोथ होता है, मसल ग्रोथ होता है, एडोलेसेंस में मसल ग्रोथ बहुत ज़्यादा होता है. एंड दिस इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रोथ हार्मोन विच इज सिक्रेटेड फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी. It secretes one more hormone which is very crucial for well-being of an organism. ये बहुत important hormone होता है और ये hormone है thyroid stimulating hormone. Thyroid stimulating hormone. ये कैसे प्रोड्यूस होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हाइपोथैलेमस? आई विल डिस्कस दैट पार्ट ऑल्सो. ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है. जब थायराइड ग्लैंड को ये स्टिमुलेट करता है तो थायराइड एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसको थायरॉक्सिन कहते हैं और ये थायरॉक्सिन मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है, मेटाबॉलिज्म करता है. विल स्टडी अबाउट ऑल दीज ग्लैंड्स इन आवर फ्यूचर क्लासेस. देन पिट्यूटरी ऑल्सो सिक्रीट्स gonadotropins, namely FSH,
follicle stimulating hormone, follicle stimulating hormone and luteinizing hormone. Both are called gonadotropins. ये दो हॉर्मोन्स स्पर्म और ओवा बनाते हैं. They make sperms and ova. Then pituitary also produces another hormone, prolactin. Prolactin जो है मिल्क प्रोडक्शन में एड करता है. It acts on mammary glands and ये एड करता है मिल्क प्रोडक्शन में. Pituitary also produces another hormone called ACTH, adreno, ऊपर लिखती हूँ मैं, adreno corticotropic hormone. ये हार्मोन एक्ट करता है एड्रिनल ग्लैंड्स पे. एड्रिनल ग्लैंड किडनी पे बने होते हैं कैप लाइक स्ट्रक्चर्स. और ये क्या करते हैं ये हम अपनी अगली क्लास में जानेंगे. पोस्टीरियर पिट्यूटरी स्टोर्स ऑक्सीटोसिन एंड ADH प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस. और ऑक्सीटोसिन हेल्प्स इन यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस. ये यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस में हेल्प करता है. When the baby is in the uterus, when the baby is about to get delivered, ये यूट्रस को कंप्रेस करता है ताकि फीटस बाहर आ सके, बेबी बाहर आ सके. ऑक्सीटोसिन इज अदरवाइज कॉल्ड लव हार्मोन. ये बॉन्डिंग में भी इन्वॉल्व होता है. हम इसके बारे में बहुत डिटेल से बात करेंगे अपने अगले क्लासेस में. हम इस पे यहाँ पे सिर्फ एक बर्ड्स आई व्यू ले रहे हैं. एंड ऑक्सीटोसिन हार्मोन को लेबर हेसन करने के लिए भी दिया जाता है. नॉट टू इंड्यूस लेबर एज सच, लेबर का जो ड्यूरेशन होता है उसको रिड्यूस करने के लिए, सो दैट पावरफुल कॉन्ट्रैक्शंस हो सकें. डॉक्टर्स डू एडमिनिस्टर ऑक्सीटोसिन इंजेक्शंस जब एक फीमेल ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ लेबर में जाती है. एंड ऑक्सीटोसिन ऑल्सो रिलीजेस मिल्क. इट हेल्प्स इन इजैकुलेशन ऑफ मिल्क फ्रॉम मैमरी ग्लैंड्स. सो ADH ये किडनी पे एक्ट करता है. एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जिसे हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी स्टोर करता है. ये किडनी पे एक्ट करता है. ये इट हेल्प्स इन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट्स इन द किडनी. एंड दिस इज हार्मोन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड एंड दिस इज मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन. दिस इज प्रोड्यूस्ड बाय इंटरमीडिएट लोब. जो इंटरमीडिएट लोब होता है पार्ट का, वो प्रोड्यूस करता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो स्किन की पिगमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. एंड हम इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे अपनी अगली क्लासेस में. Body is very sensitive to hormones. So it is very vital to maintain the right amount of hormones in the blood. The organ which produces hormones gets a signal whether the hormone is doing its job or not. Based on these signals, whether the hormone has to be, a decision will be taken where the organ decides whether more hormone has to be produced or less hormone has to be produced. Okay, we will understand this with one analogy. Pituitary gland, it is responsible for many vital functions through its secretions. So when you eat food, you produce energy, and this energy comes from a process of metabolism. So right from hypothalamus, we will see how this regulation is brought about. So hypothalamus releasing factors called thyrotropin releasing hormones or factors.
thyrotropin releasing hormones or factors are released from the hypothalamus. From hypothalamus, they get into the pituitary. They get into the anterior pituitary. And anterior pituitary secretes thyroid stimulating hormone, which stimulates thyroid gland. And thyroid gland, upon stimulation, produces thyroxine. Thyroxine is the hormone, and this thyroxine gets into the blood. And this thyroxine signals cells to metabolize food that you have consumed. So as a result, energy is produced. Hypothalamus थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हॉर्मोन्स को पिट्यूटरी एंटीरियर पिट्यूटरी में डाल रहा है. एंटीरियर पिट्यूटरी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बना रहा है एंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड को स्टिमुलेट कर रहा है. थायराइड इज मेकिंग अ हार्मोन कॉल्ड थायरॉक्सिन और उसको ब्लड में रिलीज कर रहा है और ये हार्मोन सेल से कह रहा है कि एनर्जी प्रोड्यूस करो, मेटाबोलाइज करो. जब इनफ एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है, जब बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है, तो सिग्नल फीड होता है पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस को कि अभी एनर्जी नहीं चाहिए. See, we human beings, we tend to waste stuff. लेकिन नेचर कभी वेस्टेज के फेवर में नहीं होता है. नेचर कभी एनर्जी वेस्ट नहीं करता है. तो जब हमारे एनर्जी लेवल ज़्यादा होते हैं, जब हमने फूड को कंप्लीट मेटाबोलाइज कर दिया है, अभी एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन सिग्नल करता है. जब कॉन्सेंट्रेशन थायरॉक्सिन का ब्लड में एक लिमिट से एक्सीड कर जाता है, तो वो सिग्नल करता है पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस को कि नहीं, अभी नहीं चाहिए, स्टॉप द सेक्रेशन. स्टॉप द सेक्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन. ये दो लेवल पे होता है, पिट्यूटरी लेवल पे होता है और हाइपोथैलेमस पे भी होता है. तो हाइपोथैलेमस सिक्रेट्स इनहिबिटिंग फैक्टर्स, थायरोट्रोपिन इनहिबिटिंग फैक्टर्स या हॉर्मोन्स को रिलीज करता है जो थायराइड को स्टिमुलेट नहीं करते, इनहिबिट करते हैं. जब थायराइड इज नॉट स्टिमुलेटेड और व्हेन थायराइड इज इनहिबिटेड, ये थायरॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं करता है. जब थायरॉक्सिन नहीं होता है ब्लड में, तो मेटाबॉलिज्म रुक जाती है. जब मेटाबॉलिज्म रुक जाती है, तो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती है. Okay? This is negative feedback inhibition. The feedback is fed to the glands, pituitary and hypothalamus, to stop the secretion when the secretion is not required, when the hormone is not required. In this session only, I said hormones are produced as and when required. They are not stored in the body. They are eliminated from the body. But whenever there is a need, then only they are made in the body. And some hormones do have long-lasting impact. So this is negative feedback inhibition. Let us watch this animation and see how this hormone is preventing our hypothalamus and pituitary. Let's see this animation. Hypothalamus is producing thyrotropin releasing hormone. As a result, pituitary is getting stimulated and pituitary is making TSH and TSH is fed to the thyroid gland and thyroid is making thyroxine, and thyroxine, when it reaches a critical concentration where the limit exceeds certain required level, then it goes and it instructs pituitary and hypothalamus to stop its secretion. This is how negative feedback operates in your body. But do we have only negative feedback or do we have something called positive feedback? And if so, how is it different from negative feedback and which hormones are regulated by positive feedback? Let's summarize. Hormones are chemical messengers produced by endocrine glands that control and regulate of certain cells and organs. Hypothalamus controls pituitary gland. Pituitary is the master gland. Pituitary hormones, namely GH, ACTH, TSH, gonadotropins, prolactin and MSH. Let's take up a question. Which hormone is produced or synthesized by posterior pituitary? And your options are oxytocin, ADH, both A and B, none of the above. Let's answer this question in our upcoming session. Thank you.
Keep imbibing. We believe in you.